Guys, now is the time for the chemistry. The last class of the chemistry, we have learned till the periodic properties. Today I am going to teach you its 6 types of the periodic properties. In shortcut, we say that enam, I-E-E and A-M, enam, ionization potential, electron affinity, electronegativity, non-metallic character, atomic size, metallic character, and its traits, its factors. I am going to teach you. So today I am going to complete 3 parts, that is atomic size, ionization potential and electron affinity. The next day the rest all the characters or physical properties I am going to complete. So let me show you certain things about what is ionization potential and what all those things and how does it affect. Let me show you its figure also. First is periodic properties. The properties which reappear after the regular gradation, that is, as we move across the period from left to right or down the group from top to bottom, is known as periodic properties. These are the 6 types are there, enam and trends. You can easily remember as enam बोल के उसे याद रख सकता है, I-E-E and A-M. And down the group what happens? Decreases. Then its atomic size increases and metallic character also increases. एंड अलॉन्ग द पीरियड जहाँ पे डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, अलॉन्ग द पीरियड वहाँ पे इंक्रीज होगा. एंड जहाँ पे हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ डाउन द ग्रुप, वहाँ पे अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज होगा. चलो पढ़ते हैं क्यों होगा ये. दिस इज द रीजन. लेट अस लर्न मोर अबाउट इट. फर्स्ट वन इज आवर एटॉमिक साइज. Atomic size means distance between the center of the nucleus to the outermost cell of the atom. Can you see one example? Li, I have taken lithium. It is having the 2 cells. From the center of the nucleus to the outermost cell is called as atomic size. Its unit is angstrom. That means 1 angstrom equal to 10 to the minus 10 meter. What are the factors affecting it? Number of cells, nuclear charge. दिखाता हूँ मैं आप लोगों को number of cells and nuclear charge कैसे होता है. जैसे कि आप लोग जानते हो number of cells जैसे जैसे बढ़ते जाता है automatically from the center of the nucleus to outermost cell size तो बढ़ेगा ना, तो size बढ़ेगा, तो size बढ़ते जाएगा as the number of cells increases. Nuclear charge, what do you mean by nuclear charge? Nuclear charge means the number of protons present in the nucleus is called nuclear charge. and जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होता है. जैसे एक ही पीरियड में से फॉर एग्जांपल इफ इज थर्ड पीरियड एलिमेंट, तो थर्ड पीरियड में जितना भी एलिमेंट्स है सभी का उतना ही नंबर ऑफ सेल्स रहेगा. एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ सेल्स रिमेन सेम और द पर्टिकुलर ग्रुप. So as you move from left to right, number of cells remain same but number of protons goes on increasing. So hence the nuclear charge goes on increasing. If the nuclear charge increases, intermolecular force of attraction, that means proton to electron, the cells called nuclear charge increases and they are pulling. वो अपनी तरफ खींचता रहता है सेल्स को. सेल खींचने से क्या होगा, सेल्स तो उतना ही रहेगा नो डाउट जितना फर्स्ट एलिमेंट में था, लेकिन लास्ट की तरफ धीरे से साइज कम होते जाएगा क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है. लेट मी शो यू हाउ. देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है अक्रॉस द पीरियड, बिकॉज अक्रॉस द पीरियड एंड न्यूक्लियर चार्ज आर ऑलमोस्ट सेम. हियर वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंड पीरियड. 2 H, that is the lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. So देखिए lithium में 2 cells, beryllium also 2 cells, boron also 2 cells. The bottom part, the structure of the atoms, kindly observe that. You are looking all starting from lithium to fluorine are having 2 cells, but the size goes on decreasing because of strong intermolecular force of attraction. I hope that you have cleared with this. Nuclear charge is increasing and force also, intermolecular force also increases. Factors affecting the atomic radius. one is the down the group, same as the number of cells. जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो number of cells बढ़ता है तो atomic size भी बढ़ेगा. And as I was given another example, that is as we move from left to right, nuclear charge increases, hence atomic size decreases. Remember this.
That was the topmost part down the group along the period of atomic size. Now, number 2, ionization potential. It is the minimum amount of energy required to remove an electron from a neutral isolated gaseous atom and convert it into the positively charged ion. जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जाम लिखो, एक मेटल है जिसे थोड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी देने से इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, becomes amplus ion, that is called positively charged ion. Its unit is eV per atom or called kilojoule per mole or kilojoule mole inverse. Factors the same, atomic size and nuclear charge. Let me show you how it affects with the trends down the group and along the period. Down the group is almost same with atomic size, and nuclear charge is almost also equal to the along the period. Ionization potential is less for cesium element, lowest for a cesium element, and highest ionization power is belong to helium. Let me show you its factors of the trend. It is a part of the atomic size, but I wanted to show you this one only. What does it mean? As we move down the group, the number of cells increases. As the number of cells increases, the electrons are more free to move away from the valence cell because they are having very less force of attraction with that of the nucleus. That is, the force of attraction goes on decreasing. That's why they are easy to lose. That means ionization potential decreases. Very less amount of ionization potential energy is required to remove the electron. So are you clear? As you move down the group, why it decreases, or the number of cells increases, or why the ionization potential decreases? Next comes the next one. Let me show you how ionization potential along the period or nuclear charge as it is increasing. From lithium to neon देखो, यहाँ पे सोडियम टू आर्गन तक देखो, जो टेबल नीचे दिया गया सेकेंड टेबल को देखिए. सोडियम का 496, मैग्नीशियम का 737 एंड एल्यूमिनियम का 577. धीरे धीरे से आर्गन की तरफ 1520 बढ़ते बढ़ते जा रहा है. सिर्फ सल्फर में थोड़ा कम हो गया था, दोबारा क्लोरीन में बढ़ गया एंड आर्गन में कम हो गया, सिर्फ ज़्यादा हो गया. आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ते ही जा रहा, क्योंकि nuclear charge is very much as we move from left to right due to the strong electrostatic force of attraction between the subatomic particles. Hence the cell number of cells comes closer with that of the nucleus, and it takes more amount of energy to remove the electron. Next comes electron affinity. Let me just show you this definition. Electron affinity is the amount of energy released. Ionization potential is the amount of energy required. Here it is the amount of energy released while converting an isolated neutral gaseous atom by addition of an extra electron to the negatively charged ion. Ionization potential to gain positively and electron affinity is negatively charged. जैसे कि एक एटम है जो कि X लिया गया है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, X नेगेटिव हुआ एंड प्लस इलेक्ट्रॉन affinity एनर्जी रिलीज हुआ उससे. इसलिए इसका यूनिट भी सेम एज दैट ऑफ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल eV per atom and kilojoule per mole. Its two factors, atomic size and nuclear charge. Trends, it is written same as that of the atomic size, and electron affinity also decreases here, and along the period 2 increases. How it happens? In atomic size wise, as the number of cells increases, जैसे number of cells बढ़ते बढ़ते जाता है, intermolecular force कम होते होते जाता है. कम होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब they will reduce, electron affinity reduce because they are not about to gain electron, they are about to lose electron. But in reverse case it happens if it is increasing. What increases? If the number of cells decreases, that means when you move from bottom to top, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं ये उल्टा होता है. And nuclear charge, as the greater the nuclear charge, greater is the electron affinity, क्योंकि और भी ज़्यादा अमाउंट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एनर्जी वहाँ से रिलीज होगा बिकॉज दे आर अबाउट टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. लेट मी शो यू. बिफोर दैट, क्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन दैट ऑफ द फ्लोराइन. लेट मी शो यू इट्स टेबल इज ऑल्सो अवेलेबल विथ मी. Inert gases are having zero electron affinity. You can see the table moving from left to right: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. जैसे कि 59.8 है, -15.8 से शुरू करके फ्लोराइन तक -327.9 ओके का एनर्जी रिलीज हो रहा है. किलोजूल में लिखा गया है, इस वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ किलोजूल पर मोल इट इज़ रिलीजिंग. सो बट फ्लोरीन के हिसाब से तो उसका नीचे थोड़ा देखो, क्लोरीन में थोड़ा ज़्यादा है, -349 EV पर एटम. बट देखिए यहाँ पे
लेफ्ट साइड में जो मतलब ग्रुप है 1A ग्रुप को हाइड्रोजन -72.8, लिथियम -59.8, सोडियम -53.1 क्या हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होते होते जा रहा है नीचे नीचे, बट फ्लोरीन का केस में ही क्या हुआ, बढ़ गया। उसके नीचे आप लोग जाओगे, क्लोरीन के नीचे कम होते होते जाएगा, देखिएगा आप कम होते होते जाएगा, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट ट्रू फॉर दिस। नॉट ओनली द केस ऑफ 6A ऑल्सो, -140 है, -200 है, उसके नीचे और भी कम होते होते जाएगा। ओनली द फर्स्ट टू एलिमेंट्स आर शोन, सेकेंड एलिमेंट दैट इज सल्फर इज हैविंग more electron affinity. So now we have understood that down the group electron affinity decreases and along the period and electron affinity increases. Thank you children for today this much.